guys, welcome back to Zeta Institute of Science. So, I'm here to teach you all chemistry. Students, in lecture 1, we have started with the chapter Solid States of Matter. In this chapter, basically we are going to deal about liquid and gaseous state. But in lecture 1, we have check for the differentiation of solid, liquid and gaseous, that on which of the characters liquid, solid and gaseous vary. Then we have started with intermolecular forces, and after intermolecular force we have studied the types of intermolecular forces. We have studied about the 5 types of intramolecular sources, right? And then we have studied intermolecular forces and thermal energy, how they are interrelated with each other. Today in this lecture we are going to start with the topic gaseous state. So basically we are going to deal with all types of gaseous state. Means gaseous state के characters क्या है, क्या कैसे है, पूरा deal करेंगे हम gaseous state के साथ. So if any of the student have missed our lecture 1 and lecture 2, you can get the lecture from our channel Zeta Institute of Science, or you can get the lecture 1 and lecture 2 from our playlist. The link for the lecture 1 and lecture 2 you will get in the description box. So you can check with the description box. If you are not able to find the link in the description box, you can check with our channel. Okay? Okay students, so let's start with gaseous state. आप लोगों को पता है कि एयर में कौन से कंपाउंड्स या फिर कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली कंपोजिशन ऑफ एयर पता है कि एयर में क्या प्रेजेंट है क्या नहीं, या फिर गैस क्या होती है, कौन से टाइप्स की गैसेस हैं हमारे पास. कुछ है आइडिया आप लोगों को? एनी आइडिया स्टूडेंट्स? I think you people don't have idea. So let's check with gaseous state composition of air. So basically air is a mixture of many gases. In that you will get nitrogen, oxygen, carbon dioxide as a CO2, O2 gas, okay? You will get some of the inert gases. You will get some water vapor in the air. Okay, so do you know how much percentage these compounds are present in air? So basically N2 gas, that is nitrogen gas, it is present at 78%. Oxygen in the air is present in 21%. Carbon dioxide and other few gases 0.03%. Inert gas is mainly present at 0.97%. This inert gas is mainly a type of argon gas. Okay, तो mainly अगर inert gas present है तो वो argon होगा. Water vapor is also present in some amount. We cannot judge how much water vapor is present in the air, but we can calculate the nitrogen, oxygen, CO2, inert gas and water vapor presence in the air. And ये quantity जो है वो mixed quantity है, it won't change at all. Okay? Students, let's check with the characters of gaseous state. So basically these gaseous states are lighter. From whom they are lighter? They are lighter from solids and liquids. Lighter than solids and liquids. That is, they are having density low. Density low होने की वजह से वो लोग का weight कम होता है, so they are easily randomly arranged. इसको कोई fixed volume and shape नहीं होता. As we have checked कि
मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, कंप्रेस होते हैं, तो ये लोग कंटेनर का साइज शेप ले लेते हैं। सो इसकी वजह से उनको कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स। फिर वाइडली सेपरेटेड होते हैं, रैंडम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिक यू नो दैट। फिर अगला फोर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, वो कैसा होता है गैसियस स्टेट में? वीक होता है। बिकॉज क्यों वीक होता है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फारली प्लेस्ड टू गेट ईच अदर, पर हाईली कंप्रेसिबल होता है। अब चेक करो, दिस इज माई कंटेनर स्टूडेंट्स। नाउ हियर यू कैन सी वन मॉलिक्यूल इज हियर, ये सपोज मेरा गैसियस मॉलिक्यूल्स है। सो इतनी फार डिस्टेंसिंग है इनकी कि कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा। इतने दूर दूर एक एक कॉर्नर में हो तो कैसे इंटरैक्ट होगा? तो इसकी वजह से फोर्स कुछ होता नहीं, रिपल्सिव भी नहीं हो पाता है, अट्रैक्टिव भी नहीं हो सकता। अब चार ही मॉलिक्यूल्स है, अगर इनको मैं कंप्रेस करने का ट्राई करूँगी, इनके ऊपर अगर मैं इसे वेट पुट ऑन करूँगी पिस्टन वगैरह किसी चीज़ से, सो ये मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे शिफ्ट होते चले जाएंगे। हो रहे कि नहीं शिफ्ट? अगर मैं इसके ऊपर वेट डालते जाऊँगी तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे आके एक कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। सो इसकी वजह से हाईली कॉम्पैक्ट, वाइडली स्प्रेड रैंडम मॉलिक्यूल्स, यू कैन सी दूर दूर है, रैंडमली प्लेस्ड है, यू कैन सी दूर दूर है, कहीं पे भी है, फिक्स ऑर्डर नहीं है। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी वगैरह भी लो। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ gaseous state. Now we will check with the measurable properties of gaseous state. Means इसका mass, volume, density, temperature, diffusion, ये कैसे calculate करना है हम वो check करेंगे।